लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी की है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही ये एड ऑन टॉपिक है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क कैलकुलेट किया। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सी, यहाँ से आपको 3 मार्क्स के लिए कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। State and prove the principle of parallel axis in rotation. Okay, so now let's study principle of parallel axis क्या होता है। theorem of parallel axis पहला है हमारा। ओके, सो इसका स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ moment of inertia about an axis parallel to the given axis passing to its center of mass and product of mass of the object and square of distance between them। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने अभी तक स्टडी कर ली है। नाउ व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यू वेरी वेल नोन कि अगर आपका एक कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, उसका अगर हमने सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, राइट, उसका अगर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिए जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, राइट, सो दिस बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम बोलेंगे आई सी। ओके, व्हाट इज आई सी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट सी विच इज सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ लेट्स से ये आई सी हो गया। अब अगर सेम ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले ली, पॉइंट ओ लेट अस कंसीडर, इस पॉइंट में से अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन पास की और अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, right? Now the point which we need to understand कि ये दोनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, राइट, यही पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से वो h है। ठीक है, नाउ if we want to calculate moment of inertia of this object when axis of rotation is passing through point O, let us consider ये आपका moment of inertia है, ये IO। ठीक है, उसके लिए हमें हमारे पास ये थ्योरम है that IO is equals to IC plus m into h square, where m is mass of the object and h is the perpendicular distance between two parallel axes। ओके, सो होपफुली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट समझ आ गया कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टेटमेंट लिखेंगे और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रूव दिस पर्टिकुलर थ्योरम। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कि ऑब्जेक्ट है मास m का जिसका c सेंटर ऑफ मास है। C इज अ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, लेट मी कॉल इट एज ए सी बी, एक्सिस ए सी बी जो पॉइंट C से पास हो रहा है, एंड लेट मी कॉल एम ओ पी, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, एम ओ पी। ओके, एंड h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट मी कंसीडर अ पॉइंट डी। ठीक है, एक पॉइंट डी मैंने कंसीडर कर लिया। नाउ इस पॉइंट डी से हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ये पॉइंट सी को अटैच कर लिया, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, देन ओ डी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, इनका ये दोनों पर दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस है। नाउ लेट मी ड्रॉ इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की और इस पॉइंट पे ज्वाइन की, यहाँ पे हमने पॉइंट एन दे दिया। ओके, सो इन दिस कंस्ट्रक्शन लेट मी कंसिडर ट्रायंगल ओ एन डी। Okay, so in this triangle OND, angle N is 90 degree, right? Now since angle N is 90 degree, we can apply Pythagoras theorem for this particular triangle, right? So I can write OD square is equals to ON square plus DN square।
ठीक है। नाउ इफ यू सी, ये आपका जो ओ एन है वो ओ सी और सी एन का बना हुआ है, राइट? सो आई कैन राइट हियर ओ सी एन. So ON is equals to OC plus CN. So I can put over here OD square is equals to, I can write here OC plus CN whole square plus DN square, right? Now let me apply here A plus B whole square wala formula. What is the formula for that? A plus B whole square is equals to A square plus 2AB plus B square, right? So ये formula हम लगाएंगे. So we have now OD square is equals to OC square plus 2 OC CN plus CN square plus DN square. ठीक है. Now look carefully in this triangle. ये triangle कौन सा है अभी? Now in triangle CND, in triangle CND, angle N is 90 degree. Right? So I can write CD square is equals to CN square plus DN square. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई. पाइथागोरस लगा दिए बस इस ट्राइंगल में. ठीक है. सो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर हमारा क्या है? CD स्क्वायर, राइट? सो आई कैन फाइनली राइट OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 2OC CN प्लस CD स्क्वायर. यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई? बस यहाँ पे हमने क्या किया, 2 बार बस पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है. नाउ let me write down here same हमारा इक्वेशन. नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आपका जो डायग्राम है वहां से आई कैन राइट आई सी is equals to, you know, moment of inertia का definition, integration r square dm, where r is the perpendicular distance from the axis of rotation, right? So IC is equals to, I can write this is equals to CD square dm. C से D का perpendicular ये वाला distance, right? Similarly, I can write IO is equals to integration. IO का भी ये कौन सा distance है? OD, right? So I can write OD square dm, right? So from here I can write IO is equals to integration. OD का value है आपके पास ये. Okay, so let me put this value here. OC square plus 2OC CN plus CD square dm. Okay, now let me use integration का formula. Integration a plus b plus c dx होगा, so we can write it as integration a dx plus integration b dx plus integration c dx. Okay, so I can use this formula. So I write IO is equals to integration OC square dm plus integration 2OC CN dm, right here CN, okay, CN dm plus integration CD square dm. ओके. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे आपका OC देखो क्या है आपका? H है, राइट? सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन H स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू H इंटू CN dm प्लस इंटीग्रेशन CD स्क्वायर dm. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? ओके. सो इंटीग्रेशन CD square dm, this is your IC, right? So I can write here IO is equals to integration H square. H is a constant thing, so we can take it out of the integration, plus 2 into H is also constant, so I can write C into N dm plus this particular quantity is IC. Am I right? Okay. So now
I can write IO is equals to h square. इंटीग्रेशन डीएम, डीएम का क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल मास मिलेगा, राइट, प्लस 2h इंटीग्रेशन सी एन डी एम प्लस C. Okay, now this integration from the concept of center of mass, this integration is equals to 0. What is Cn? देखो ये वाला इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास से, अगर हमने सेंटर ऑफ मास से सेम डिस्टेंस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं, so that integration is becomes 0, right? So this integration will be 0, and finally I naught is equals to m h square plus ic. This is your statement for axis parallel axis theorem. Okay, so this is how you can prove this particular theorem. क्या किया है, बहुत इजी है. हमने क्या लिए, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिए, देन ये पाइथागोरस लगाए, देन ये वाला ट्रायंगल ले लिए, पाइथागोरस लगा लिए, हमने IC और I नॉट के वैल्यूज पुट किए, एंड देन वी यूज बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस हैपेंस, सो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन. ओके, सो थैंक यू. यहाँ पे उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स कॉपी कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन.